Assalamu alaikum. I'm Tamkin, Riaz, and welcome. It's Tuesday, 6:30, and it only means one thing. You are watching the iBiz show live from London. We're on Sky Channel 851 and also on Virgin Media 839. So as you all know, every Tuesday we are here live from London with the iBiz show, and today is slightly different in that there are only two of us here today, no guests today, and as a reason for that is we've had a lot of calls and emails and texts asking us about, they want to know what is a simple business, how can they find a simple business, and a simple business that can make money fast. Now, obviously, these are just guidelines, obviously, you know, otherwise we'd all be printing millions and millions of pounds. So these are just guidelines for you. So without further ado, I'm going to introduce my co-host for today. Assalamu alaikum, Faisal Talpur, how are you? I'm fine, alhamdulillah, wa alaikum assalam, kaise hain? Alhamdulillah, good. It's been a busy week and a busier week to come, inshallah. जी बिल्कुल, वो जैसे वक्त जा रहा है, वीक जो है वो और बिजी होते जाएंगे अप टू क्रिसमस, आपको पता है, क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, सब एवरीबडी इज़ बैक इन द बिजनेस मोड जिसको कहते हैं, तो या माशाल्लाह इट्स बीन वेरी गुड. Right, how do we make money fast with the disclaimer? हाँ जी बिल्कुल. चलते नाजरीन की तरफ. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अमीर फैसल तालपुर और तमकिन रियाज एक बार फिर आपके फेवरेट बिजनेस शो iBiz के साथ हाजिर हैं. नाजरीन माशाल्लाह हमारे शो के जो फीडबैक हैं वो बालातर से बालातर, बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं. एंड थैंक यू ऑल, बहुत शुक्रिया. आप सब हमारा शो बहुत पसंद कर रहे हैं. हमारे सोशल मीडिया पे जो फीडबैक्स आते हैं, और ऑब्वियसली सर्टन शोज़ इन बिटवीन हम लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे जो फीडबैक्स आते हैं हम लोग चाहते हैं कि हम अपने नाजरीन को मायूस न करें. एंड आज का शो जो है उसी की एक क्रिएशन है, उसी फीडबैक की एक क्रिएशन है. हमें ये बहुत लोगों ने कहा है कि भाई आप माशाल्लाह बहुत डिटेल किस्म की चीज़ें आप लोग शो में डिस्कस करते हैं. क्लाइंट्स अपना जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके बारे में उनकी रैक्स टू रिच स्टोरीज़ बताते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं, विच इज़ वेरी गुड. मगर एक बहुत सिंपल तरीका अगर हो पैसा बनाने का तो वो क्या है? तो हम लोग ज़रा सोच में पड़ गए. हमने कहा कि भाई ये बेस्ट हो जाएगा अगर हम लोग इसके ऊपर एक शो करें कि भाई सिंपल एंड फास्ट और एथिकल तरीका बहुत ज़रूरी है. पैसे बनाने का क्या होना चाहिए. तो आज का हमारा मौजू है मेक मनी फास्ट. अब अगेन मैंने एथिकल का लफ्ज़ शुरू किया, मेरा ख्याल है इस वक्त हमें डिस्क्लेमर भी दिखा देना चाहिए नाजरीन को. नाजरीन जब भी एक तो हम अल्लाह का शुक्र है हम सारे जो है वो कोशिश हमारी ये होती है कि हम लोग एक एथिकल बिज़नेस करें, और हम लोगों की कोशिश ये भी होनी ज़रूर चाहिए कि हम लोग अपने क्लाइंट्स को खुश रखें. तो ये डिस्क्लेमर जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर है, इस चीज़ को प्लीज़ जहन में रखिएगा. इस शो के अंदर बहुत सारी एडवाइस, गाइडेंस, बहुत सारे जो है डिस्कशंस चलेंगी. आप उससे ज़रूर सीख सकते हैं, आप उसको ज़रूर अप्लाई भी कर सकते हैं, मगर हमारे से उसका कोई कनेक्शन नहीं है. बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट नो यू, वी डोंट नो योर एप्लीकेशन, वी डोंट नो योर एप्टीट्यूड, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मगर प्लीज़ डू लर्न समथिंग. अगर आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करें, नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाएं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट आगे आपके सामने आने वाला है. आजकल का हमारा जो ज़माना है वो बहुत फास्ट है, हर चीज़ फास्ट है. तो हमने कहा कि भाई आपके स्मार्टफोन्स आ गए हैं. दुबई ने जो है ना माशाल्लाह वो जो है ना वो पायलट टैक्सीज़ जो है ना वो स्मार्ट कार्स और उड़ने वाली टैक्सीज़ उन्होंने जो है ना वो भी लॉन्च कर दी हैं. तो पैसा जो है ना या बिज़नेस जो है ना वो फास्ट क्यों नहीं हो सकता? तो उसी पर हम लोग आज इंशाल्लाह शो कर रहे हैं. तो आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल, thank you very much. So, as you know, and we're just saying, disclaimer again, it's general advice and it's for education. Now, there are certain things you can do and there are certain things you shouldn't do. So one of them, people assume that they have to create a product. They have to, get people hyped up to purchase things, find a niche market and then, find the niche market and then try and sell to people. Look, no one's thought of this idea, no one's got this idea, we want to make this product. Now, that is a way, but that is if you've already got a lot of money
What do you think? That's if you've got a lot of money in research and development and budgets, and you've got millions in the bank, etc., and you're looking for something new, the bell curve jar, and then you're reaching a plateau, and then you have to think that way. But that's not the aim, isn't it? So it's the wrong way, really. It's not wrong, but it may not work. जी बिल्कुल. It may not work. Basically होता ये जैसे कि हम लोग शो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे तमकीन, कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इस चीज़ में घुस जाते हैं कि भाई हम लोग परफेक्ट प्रोडक्ट क्रिएट करें, या कोई चीज़ इन्वेंट करें, या कोई चीज़ इनोवेट करें, ठीक है ना, या फिर कोई हम लोग नई मार्केट ढूंढें, राइट, कोई किसी न किसी किस्म की कोई यूनिकनेस हम लोग लाएं. इस मॉडल के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, और वो फ्लॉ है बहुत, इसके अंदर पैसा लगता है, इसके अंदर टाइम लगता है, इसके अंदर बहुत जद्दोजहद होती है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है. तो अगरचे कि आपको क्विक और सही तरीके से जल्द पैसा बनाना है, दिस इज़ नॉट द मॉडल यू शुड बी यूजिंग. जो ये नहीं, आगे जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर ये जो मॉडल है ना, ये बहुत ही स्लो मॉडल है, ठीक है. या तो फिर बंदे के बिज़नेस पोर्टफोलियो हो कि भाई 2-3 बिज़नेस के पोर्टफोलियो इस तरीके के, क्योंकि 2-3 बिज़नेस जो है ना आपको फास्ट कैश मनी जनरेट कर रहे हैं, कि आपकी गाड़ी चल रही है, आपको पेट्रोल चल रहा है, आपका पेट्रोल डालने के पैसे, और फिर आप जो है ना वो एक रिसर्च मोड में चले जाएँ कि भाई मैं एक नई मार्केट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, या नया प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ. मगर अगरचे कि आप फ़ौरन बिज़नेस में घुस के फ़ौरन पैसा कमाना चाहते हैं, तो दिस इज़ नॉट द मॉडल फॉर यू. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इतनी बाहर लोगों की जो एडवाइस हैं, बुक्स हैं, इंटरनेट पे जब आप जाते हैं, तो उसके अंदर बस यही होता है कि भाई आप सब कहते हैं कि भाई यूनिकनेस क्रिएट करो, इनोवेशन क्रिएट करो, क्या नाम है, इन्वेंशन कोई आप बनाएं, राइट. तो उसके अंदर जो है ना वो लोग कभी भी पैसा नहीं बना सकते. And with inventions, as you know, there's so many things you need to do to safeguard your invention, and that costs a lot of money as well to safeguard. Absolutely. That's certainly not the fastest way to make money. Well, we are now going to go to a quick azan break. So just before the azan break, we just tell you, the program is how to make money fast. It's for information and obviously for knowledge, and obviously everything we do we disclaim, because we obviously do not know you or your products or how you're going to use the information. So inshallah we will see you on the other side of the break on the iBiz show. And welcome back to the iBiz show after that small azan break. So we're just discussing ways to make fast money, and one was create a new product, invent something, or find a niche market. And we were just saying before the break that is a fantastic way, but it is a very slow way and the hardest way to make money. To start with, so that's correct, isn't it? Obviously it takes time and money to do that, so that's not the easiest and quickest, but it's a hard way, but it does work. जी, और इसके अंदर फिर प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ जाती है, जिसको कहते हैं ना, बहुत लोग फिर जो है ना वो एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं. जैसे कि हमारे स्लाइड 2 पे आप देखेंगे नाज़रीन, बहुत लोग जो है ना वो एनालिसिस पैरालिसिस के अंदर चले जाते हैं, बहुत डिटेल के अंदर चले जाते हैं, रिसर्च के अंदर चले जाते हैं. इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग समथिंग ग्रेट, राइट. जैसे कि नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स एंड पीपल स्टार्टिंग बिजनेसेस थिंक दे नीड, या आपको क्रिएट प्रोडक्ट नया करना पड़ेगा, या आपको इन्वेंट करनी पड़ेगी कोई ना कोई चीज़, या आपको कोई ना कोई नीश मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, या यूनिकनेस लानी पड़ेगी प्रोडक्ट में. ये तरीके गलत नहीं है, मगर इसमें आपका पैसा जल्दी नहीं बन सकता. दिस इज़ नॉट अ फास्ट वे टू मेक मनी. तो चलते हैं, एक रॉन्ग अप्रोच जो है इसको, एक कई दफ़ा जो 80 to 90% ऑफ द बिजनेसेस जो अप्रोच लेते हैं, रॉन्ग अप्रोच, जो कि स्लाइड 3 पे देख सकते हैं नाजरीन, कि आपने जो है ना वो पहले प्रोडक्ट बना लिया, राइट, फिर आप उस प्रोडक्ट को आप स्लाइड 3, तो उस प्रोडक्ट को आप जो है ना वो दिखाने की कोशिश या बेचने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, राइट. और फिर ऑब्वियसली वो मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्योंकि वो मार्केट को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है. It's a wrong timing. It's a wrong timing. बस ये समझे. मिसाल के तौर पे एक बड़ा छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से कि मैं दूध बेचता हूँ, राइट. मैं दूध बेचता हूँ और हर दिन सुबह को जो है ना मैं आपके घर आता हूँ कि जी मेरे से आप दूध खरीदें, राइट. और
मुझे ये नहीं पता कि भाई आपको उस दूध की ज़रूरत है या नहीं है. If you're allergic to milk, you're allergic to milk, whether you need the milk, you're buying it from somebody else, right? तो अगर चाहे कि मैं आपके दर पे आके खड़ा हो गया कि जी तमकीन मेरे से आप दूध खरीद लें, राइट? आप कहेंगे नहीं जी, मैं तो, मेरी वाइफ ने तो कल रात को शॉपिंग की, हम तो हर रात को शॉपिंग करते हैं, सामने सुपरमार्केट है, आपकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो मेरी वो मार्केट की एक जो चेन है वो नहीं बनी. बहुत लोग ये करते हैं, पहले उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, उसके बाद ways of selling it or making a market. ways of selling, that's the right way of putting, and that's the very wrong approach. क्योंकि आपको उस चीज़ का आप पता ही नहीं कि उस चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में या नहीं. पहले आप ज़रूरत ढूंढो, फिर आप प्रोडक्ट ढूंढो, फिर आप जाके उसको बेच दो. दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट. तो इसका जो राइट अप्रोच है, जो कि स्लाइड 4 पे है, दैट इज़ द राइट अप्रोच. यानी कि मार्केट नीड्स अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस. एंड अभी आगे शो में इंशाल्लाह नाज़रीन आप देखेंगे कि इसको किस तरीके से आप जो है ना वो डिफ्रैगमेंट करके आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि भाई मार्केट नीड्स अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, राइट? पहले आपने वो रिसर्च कर ली, फिर आपने उस प्रोडक्ट को ढूंढा. अगर आपको फास्ट मेक मनी करना है तो आप उस चीज़ को बनाए नहीं, आप ढूंढें उस चीज़ को. अवेलेबल है, आप जाएं और आप उसको बेच दें. खरीदो फरोख्त, ट्रेड, राइट? On a very quick one, just an example that someone gave me is if you want to find out what is trending, what is selling, go to eBay, go to Amazon and see what the 100 top sellers are. Absolutely. And see if you can find or buy those items elsewhere for a much more substantially lower price, which are already selling, and be competitive, or for a higher price and a better quality. So you know already what is selling in the market. So then you do your research and tweak it that way. बिल्कुल आपने 100% बात सही कही है. अब तो हमारे पास इंटरनेट जैसी टूल है, गूगल जैसा टूल है, राइट? आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं. And country wise as well, you can go from country to country to see what is selling. Hijabs may not be selling in America, for example, or Australia, but they're very, very sellable in UK at the moment. So you know it does vary from country to country, location to location. देखिए रिसर्च के 3 तरीके हैं जो मैं 3 या 4 तरीके हैं जो मैं समझता हूँ बहुत इफेक्टिव, पैसे वाइज इफेक्टिव तरीके हैं रिसर्च करने के. एक तो है आपका इंटरनेट, बिल्कुल, राइट? दूसरा है आप उन लोगों में उठे बैठे जिस प्रोडक्ट से आप अपने आप को रिलेट करना चाह रहे हैं, राइट? तो आप अपना नेटवर्किंग वगैरह उस हिसाब से बनाएं, अपनी दोस्तियां वगैरह उस हिसाब से बनाएं कि आप नॉलेज गेन करें. दिस इज फर्स्ट हैंड नॉलेज, मार्क टू मार्क, राइट? कि इस कन्वर्सेशंस क्या चल रही हैं, B2B even, business to business, you should be listening कि भाई इस मार्केट के अंदर क्या कन्वर्सेशंस चल रही हैं. आपके पास इंटरनेट है, ठीक है? उसके बाद फिर आप ये जाके देख सकते हैं कि भाई खरीदो फरोख्त जो है इस मार्केट के अंदर क्या लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, राइट? अगर पैसा इस मार्केट के अंदर खर्च हो रहा है फिर तो मार्केट है. अगर चे के कोई पैसा खर्च करने को उस मार्केट में तैयार ही नहीं, दैट मीन्स मार्केट डजंट एग्जिस्ट. For example, hair products, a lot of ladies, especially from Africa and West Indies, they are so much into hair products, you cannot believe. And that's why you see on the high streets, a lot of hair product shops, wigs and sprays, and even for men, you know. You know, so a hair product, you can't really go wrong if you've done your research and know your market. Makeup and beauty is another one. Anti-aging is really coming on board as well. Anti-aging products and has that work. Absolutely, बिल्कुल सही. नाज़रीन, अब जो आपको हम लोग रूल बताने जा रहे हैं, गोल्डन बिजनेस रूल जिसको कि हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है पैसा बनाने का. एंड लिटरली इतना आसान है कि ये एक लाइन में है. ऑफ कोर्स इसके अंदर रिसर्च है, मेहनत तो हर चीज़ में होती है. अल्लाह ताला ने कहा हुआ भी है कि भाई मेहनत करो, तो मेहनत तो करनी पड़ती है. मगर ये एक लाइन का बिज़नेस कॉन्सेप्ट है. अगर ये लोगों को समझ में आ जाए तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू एनी बिजनेस. फाइंड अ मार्केट विद अ नीड, राइट? एंड देन सर्व दैट मार्केट, राइट, विद दैट नीड. Find out what's needed and give it to them. Exactly, as simple as that, right? So it can be the whole business can be summarized in one sentence, right? इसके अंदर ऑफ कोर्स काफ़ी डिटेल आ जाती है और वो डिटेल अभी हम लोग डिस्कस करते हैं. इसको हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा वाज़े अगर करें तो मच फास्टर एंड सिंपलर वे टू मेक मनी इज़ टू ओपन योर आइज एंड ऑब्जर्व व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द मार्केट्स. हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है तमकीन कि स्पेशली जो हम लोग सिटी के अंदर जो होते हैं, जो अर्बन लाइफस्टाइल है, इसके अंदर हम लोगों की बड़ी सेलेक्टिव हेयरिंग हो गई है, राइट?
we are not sensitive to what is required, what is needed, right? हम लोगों की जो हमारा जो circumference है, हमारा जो influence है, area of influence, वो बहुत महदूद होके रह गया है, right? It only lasts up to our family members, maybe sometimes slightly extended family members, and maybe some of the other, as in if you're working in the community or if you're working with your business, and that's it. मगर हम लोग अपने कान, नाक, आंखें सब बंद करके रखते हैं, बिल्कुल, राइट? अगर हम लोग ऑब्जर्वेंट बन जाएं और अगर हम लोग वाकई सुने, कान दें कि भाई क्या क्या हो रहा है, किस चीज़ की कहाँ पर ज़रूरत है, और फिर हम उस चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें, बिजनेस बन गया. Simple as that. And also it's to do with timing as well. For example, you're at the end of the season and you're selling summer, end of summer, and you're selling T-shirts. Well, it's the end of summer, so what is going to be the next phase? The next phase is think ahead and think, oh yes, people are going to need warm clothing or jumpers and coats and boots for winter. You know, not autumn is coming. So it's things like that. Be alive. There's something that I heard very, very recently was this: in a whole year, there is not one season. There are 4 seasons in a year. Yes. So you have to go along with the seasons as well. And the same goes for business. It's not always going to be printing money for you. That's right. Every day for the whole year. That's right. You have to be seasonal as well. Absolutely. Absolutely. आगे बढ़ते हैं नाजरीन, स्लाइड 5 की तरफ. 3 सिंपल स्टेप्स जो है पैसे बनाने के, मेरे नज़र में और तमकीन की नज़र में ये हैं. फाइंड अ मार्केट विद अ नीड, फाइंड अ प्रोडक्ट दैट विल फुलफिल दैट नीड, सेल दैट प्रोडक्ट टू दैट मार्केट टू सर्विस दैट नीड. ठीक है ना? ये 3 स्टेप्स हैं. बड़े आसान स्टेप्स हैं, थोड़ी सी मेहनत है और बहुत ही जल्दी इससे जो है वो पैसा बनाया जा सकता है. And now we're going to break those steps down even further. Absolutely. So अगरचे कि हम लोग इस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, तो find a market with a need. इसका मतलब ये है कि जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट लुक अराउंड, राइट? कि भाई आप पहले तो, अच्छा कई दफ़ा ये होता है कि भाई लोगों को ये नहीं पता, भाई मुझे ये नहीं पता मैं शुरुआत किस चीज़ से करूँ. तो शुरुआत किस चीज़ से करने का मकसद ये है कि शुरुआत तो बहुत चीज़ों से की जा सकती है. मैं 2 चीज़ों का दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि डू यू हैव लव और पैशन फॉर समथिंग. इफ़ यू डोंट हैव लव और पैशन फॉर समथिंग, बिकम पार्ट ऑफ somebody else's passion or love. Yes. ठीक है ना? Replicate. बिल्कुल. और इससे आपकी इब्तिदा हो सकती है, इससे आपकी बिस्मिल्लाह हो सकती है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगेन आई रिपीट दिस कि either you should have love or passion for something. It can be sports, it can be anything, it can be clothes, it can be cars. Hobby or your hobby you love, yes. Anything, right? अगरचे कि आपकी लव या पैशन किसी चीज़ का नहीं है, किसी और के लव और पैशन का हिस्सा बन जाओ. And especially if you see advertisements on the television and radio and on the billboards of what's trending, what the love and passion is at the moment as well. Absolutely. So so that's what it is. So first look around. Look around से मतलब ये कि भाई आपने अपने आपने सारे अपने आज़ा जो है वो खोल 4 आँखें भी होती हैं. कहीं बंदे की 4 भी होती है. मुझे भी लगने वाला है चश्मा वैसे. तो अपना क्या नाम है जो है ना पहले तो आपने जो है ना अपनी नीड ढूंढनी है मार्केट की, फिर आपने प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है ना, उस मार्केट का, और फिर आपने जो है ना बायर ढूंढना है. The most important is the buyer. At the end of the day, if they're not buying, everything else has gone to waste. So a buyer is very important. And then don't forget, you have to look after that buyer as well. Of course. Yes. And the buyer wants something, you haven't got it, and you say, oh, you have to wait 28 days while I get it from China for your order, or 13 weeks. Also, you'll need stock as well, or just-in-time delivery. But you have to service your buyer because they are the person handing over the money. जी, बिल्कुल. I mean, वही वाली बात ना कि once you know कि भाई आप किस चीज़ के अंदर आप अपना पैशन आपका है या किस चीज़ के अंदर आप घुसना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर थोड़ा बहुत आपने रिसर्च की, आपको अगर नीड मिल गई उस मार्केट के अंदर, भाई इस मार्केट में नीड का मतलब ज़रूरत, राइट? आपने किसी की ज़रूरत पूरी कर दी, इसको बिजनेस कहते हैं. I've just thought of something while you're saying that. For example, when Ramzan is coming, in Asian households,
especially Roo Hafsa. जी. You know, everyone drinks that. Absolutely. Well, when I say everyone, a lot of people drink that. And also khajoors, जी, you know, बिल्कुल, dates. बिल्कुल, बिल्कुल. So you can forward think. It's my wife's favorite. It's my favorite, but It's my favorite as well, and I like it in milk, जी. not water, because you get the watery one as well. The other one is mango season. जी. As soon as mango season is around, people are dying for mangoes in June, July. So you can think ahead as well, you know. So just a few tips for the future. बिल्कुल, absolutely, absolutely. It could be seasonal. It could be seasonal. It could be क्या नाम है, hobby related. जी. It could be lifestyle related. Yes. It could be जैसे कि हम लोग कह रहे हैं ज़रूरत related, right? तो you know, एक दफ़ा आपने उसको ढूंढ लिया, फिर आपने प्रोडक्ट ढूंढना है जो उसके लिए परफेक्ट फिट होगा जी. और फिर आपने बायर ढूंढना है ऑफ कोर्स. तो ये 3 इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस कंप्लीट हो गई तो आपका बिजनेस हो जाएगा. So need, product and buyer. बिल्कुल, ठीक है ना. अब लोग ये कहते हैं कि जी हम ये कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं. स्लाइड मेरा ख्याल है 7 और 8 की तरफ कि भाई फर्स्ट लुक अराउंड, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया. हाउ डू यू डू दैट, यानी कि आप उस नीड को आप रिसर्च करें, रिसर्च दैट नीड, यू रिसर्च द प्रोडक्ट एंड यू रिसर्च द बायर. अब इसके आगे मैंने कुछ और भी लिखा हुआ है, यानी कि बहुत लोग जो है ना वो रिसर्च ही गलत करते हैं, उनको रिसर्च ही करना नहीं आता, राइट. तो उनका पूरा का पूरा बिजनेस प्रेमिस ही गलत होता है, राइट. तो यानी कि अगर चाहिए कि आप एक इमारत बना रहे हैं और आपने उसकी पहले फ्लोर पे आपने जो है ना वो रेत से आपने शुरुआत कर दी, राइट, और उसमें आपने फाउंडेशन नहीं, तो वो इमारत ने तो खड़ी नहीं होना, राइट. तो उनको दे डोंट इवन नो द बेसिक्स ऑफ हाउ टू डू द रिसर्च. नाउ उनका रिसर्च का तरीका ये होता है जी मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसकी कि इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना. तो the only way you can mahsoos the need is if you got a pain in your tooth, you got a toothache. Yeah, exactly. And you need some paracetamol. That's right. That's the only one I know. That's right. Otherwise there's no need. No, exactly. No need for the paracetamol. Exactly. And toothache. Exactly. तो महसूस पे अगर बिजनेसेस खड़े होने लगे, राइट, तो फिर तो माशाल्लाह हम जैसे कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में होता है, हम सब वी ऑल वुड बी मिंटिंग मनी at the beginning, एंड मिंटिंग मनी. तो कि भाई मैं महसूस कर रहा हूँ या फिर मुझे लगता है, राइट. अजम्पशन is one of the biggest killers in business. Oh yes, definitely. Right? One should never We've seen a lot anything. of businesses fail on assumptions. बिल्कुल. कि भाई मैंने ये सोचा या मैंने ये महसूस किया, मैंने ये तसव्वुर किया, राइट. कैसे तसव्वुर कर लिया भाई, right? Gut feeling. Do you see what I mean? But then the gut feeling may be for your area or your immediate family or whatever. That's right. There are 7 billion people in the world. You cannot build a business. Is it businessable? Local. Yes, isn't it? You see, that's the whole point कि भाई क्या चीज़ आप क्या अब वो भी देखें ना, आपका ये भी होता है कि आपका जो है जहनियत, आप कितना बड़ा, आप एक ठेला भी लगा सकते हैं. There is nothing wrong with it. No. आप अगर एक बच्चों के खिलौने का ठेला लगा रहे हैं और अगर if that is helping you to feed your family, that's it, right? For example, have you seen all these pop-up mobile shops selling cards and repairing phones? जी बिल्कुल. We cannot live without our phones. Absolutely. You drop it, it goes wrong, something, you quickly rush. Where's the nearest place I can get it repaired or replaced? बिल्कुल. So that is a need as well, which was not there 5, 10, 15, 20 years ago. बिल्कुल. But it is now. And no one can live without their, well, when I say no one, most people cannot live without their telephone, a smartphone. Exactly. Yes. And जैसे कि मैंने कहा अभी कि भाई जो नीड है उसका साइज भी पता होना चाहिए ना. अब जैसे अगर चाहिए कि आपका एक ठेला है, राइट, एक छोटा सा ठेला है in the middle of nowhere, or somewhere where there are a lot in the middle of a market, footfall. Yeah. In the middle of a footfall. Yeah. ठीक है ना. तो अगर आप वो खिलौने बेच रहे हैं, परफेक्ट है. Perfect. Yeah. That's all it is. Yes. मगर अगर चाहिए कि आप जो है एक एम्पायर खड़ी करना चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आपका वो ठेला आपको एम्पायर तक पहुंचाएगा, then you are hardly mistaken. That's not going to happen. No, right? no. That's where you need to have a bigger need. You see, the amount of money that you make is directly proportional to the value of the need in the market. Yes, that's a very good one. ठीक है ना. Yes. तो आप कितने बड़े बनते हैं, राइट, डिपेंड करता है कि उस चीज की कितनी जरूरत है मार्केट के अंदर. How many people are purchasing? For example, luxury yachts worth 50 million, 100 million, planes. Exactly. How many people can afford that? 1%? But then every day people need to eat. Absolutely. Yeah? For example, rice, bread, milk. That's a bigger demand. जी. So you've got to look at it that way as well. How many people are actually purchasing your goods daily, monthly, weekly, yearly, 10 years? Hajj, Umrah, for example.
you know, not everyone can go to Hajj every year. No. Not everyone can go to Umrah, but I hope everyone does when they're allowed. You know, and not everyone can go on holiday. So you have to research the market and the trends, and then where are people going on holiday? बिल्कुल. What sort of holiday? Beach holiday, or is it a family visiting holiday, or is it a historical that you're going to, you know, places of history? Is it a hiking holiday? So you know, then you have to subset, and subset. Exactly. And the sooner you do, the better it is. Yes, right? yes. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. Live. यानी कि is it needed now? Yes. ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी है. यानी कि ये इस चीज़ की क्या करंट ज़रूरत है. Yes, live. I like that. Live, current. जी बिल्कुल. बिजली. Is it a fast mover? हाँ, exactly. Yes. You know, is it a fast move? Is it needed now? Because these new little things that they spin around their fingers, you know, that the kids, that is, you know, now that is live at the moment. But it's going to disappear soon. मैं दोबारा आपको absolutely right. मैं दोबारा आपको अपने मैं दूध वाला बन जाता हूँ. दूध वाला, milkman. मैं दूध वाला हूँ. आपको दूध की ज़रूरत है. मैं आ गया, आज ट्यूसडे मॉर्निंग था, मैं आ गया आपको दूध देने. Oh, yes. ठीक है. And you run out and you haven't got any. Right. You can say two things to me, or you can say three things to me. You can say मुझे तो कल ज़रूरत थी दूध की, आज तो नहीं. आज तो नहीं. Yes. Right. Or you can say आज वाकई मुझे ज़रूरत है. Or you can say भाई आज मुझे ज़रूरत नहीं, कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी. जी. The first one and the last one, मेरा तो काम नहीं बना. आपको कल ज़रूरत थी और आपको कल ज़रूरत पड़ेगी. मैं आपके सामने दूध लेके आज खड़ा हूँ. ठीक है ना? आप फ्रिज में रखते हैं. We gotta find positive ways. That's a different scenario. फिर तो मुझे आपको But if you're in the middle of the desert, there's no fridge, no electric. नहीं, actually that's a good idea. I can even sell you a fridge. I'll sell you a fridge. Fridge भी पकड़. You gotta think long term. Exactly. I'll sell you a fridge as well. नहीं, तो you know, it's one of those things. Yes. If you are going to, if the need is live now, if it is current now, यानी कि उसमें electricity है आज. Current आज. और अगर चाहिए कि वाकई उस प्रोडक्ट में इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, उस प्रोडक्ट के अंदर करंट है, उसकी नीड है आज, राइट. मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैं आपके पास दूध ला के खड़ा हो जाऊँ. आप कहते हैं जी वही आप वाली बात, आपने कहा लैक्टोज टॉलरेंट. ठीक है ना? आप कहते हैं मुझे मुझे दूध चाहिए मगर मुझे सोया मिल्क चाहिए. सोया मिल्क चाहिए. ठीक है ना? तो मैं आपको दूध दे रहा हूँ मगर आपको चाहिए सोया मिल्क. अगेन देयर इज अ मिसमैच. इफ देयर इज अ मिसमैच आई विल नेवर बी एबल टू सेल इट. That's where the research comes into it. Right. Have all the milks available. This is where people feel. Yeah. Have 2 or 3 brands. 2 or 3. Almond milk, and goat's that's where milk. The diversification also comes into play. And the niche. Absolutely. That's where the niche, the diversification comes into play as well. आगे बढ़ते हैं. The live. Is there money in? Is there money in the market? That's right. Is there money? Are you making 1p or are you making £10 a product? Is it profitable? दोबारा दूध पे चले जाते हैं. The milkman. I like it. ठीक है ना? दोबारा दूध पे चले जाते हैं. अब ये समझें कि मेरी जो भैंस है, उस भैंस को मुझे संभालने में हर दिन 1000 रुपए लगते हैं. पाकिस्तानी रुपीस लगा लें या 100 पाउंड लगा लें. ठीक है ना? और लेट्स से वो 10 लीटर दूध देती है. अगर मैं वो 10 लीटर दूध, 1 लीटर दूध अगर मैं 1 पाउंड का बेच रहा हूँ, तो मुझे तो 10 पाउंड मिल रहे हैं. ठीक है ना? And it's costing you. Exactly. मेरी भैंस को मुझे संभालने के लिए 100 पाउंड लग रहे हैं. आप बात समझ रहे हैं? तो अगर चाहिए कि तो मैं तो 90 पाउंड के घाटे में हूँ और हर दिन 90 पाउंड के घाटे में. डू यू अंडरस्टैंड? तो बिफोर आई नो इट वेरी सून मुझे तो भैंस को चारा डालने के लिए भी नहीं, वो बेचारी दूध देने भी बंद कर जाएगी. ठीक है? मैं आपके घर आना बंद कर दूंगा. तो कहने का मकसद ये है कि भाई इज देयर मनी इन द मार्केट. This is another thing people profitable, sustainable, and is it enough for you to live on? अब देखिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ. हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ट्रेड करते थे. ठीक है ना? और बहुत लोग ट्रेड में घुसते हैं बिकॉज दे नो कि भाई इट्स सुन्नत. And it's बरकत बहुत होती है. सुन्नत, it's बरकत, it's recommended, it's highly suggested, everything. ठीक है ना? मगर where they failing कि भाई अगर चाहिए कि आपको मिसाल के तौर पे आपकी आम वाली एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, कि भाई एक आम है, चलें ये थोड़ी सी पेरिशेबल फ्रूट है, किस कोई और राइस की एग्जांपल one month, 1 week lasting. हाँ, एनीथिंग, राइस की एग्जांपल ले लें, which is everlasting, long term, and the older it is the better even. Exactly. या फिर स्क्रैप मेटल का एग्जांपल ले लें. ट्रेड कर रहे हैं आप, A to B आपको लेके जाना है, इसको कहते हैं ट्रेड, राइट. मिसाल के तौर पे मैंने एक बंदे से पकड़ा और मैंने आपको बेच दिया. An added value in between your time, your effort of buying, sourcing, selling, and then giving it and delivering it and whatever. ठीक है ना? That's the added value. तो हो ये absolutely very good. That's all the added value, and of course all that comes with a cost to me. Yes. ठीक है ना? So when I'm doing all of that, if I'm giving it to you,
राइट, एंड मैं जब आपको ये चीज़ दे रहा हूँ और मेरे लिए उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी मुनाफा नहीं है, तो मेरा बिजनेस तो घाटे में है। आप बात समझ रहे हैं? एंड दैट्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव अ बैड टेस्ट इन माउथ अबाउट ट्रेड, क्योंकि वो लोग अपने फिगर्स नहीं करते, राइट। एंड कई दफ़ा ये होता है प्राइसेस इन मार्केट्स आर फ्लक्चुएटिंग, एक से लेके बी तक पहुंचाने में कभी जो है ना वो कार्गो के रेट्स बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, मनी एक्सचेंज रेट्स बढ़ जाते हैं। यू सी व्हाट आई मीन? सॉरी, बोलें। Yeah, this for example, Himalayan salt is very good for you. जी, It's in Pakistan. जी, In Pakistan, it's 70 rupees a kilo, 50 rupees a kilo, 100 rupees a kilo. In this country, to get salt delivered to the UK is £2.50 a kilo. Unless you do it via ship, but then you need a whole container. Wow. So it's not viable. No. Because of the transportation costs. Exactly. But if it's round the corner and you're digging a hole and you find some salt, Yes. natural salt, is a different matter because it's almost on your doorstep. Absolutely. But you do have to think of the transportation costs and the time of delivery as well. Of course. Because it takes Because 13 time is weeks, money. 3 Time months. is money, of Yes, course. yes, Absolutely. And that needs to be factored in. Yeah, yeah. तो अगेन घूम फिर के बात Go रिसर्च with पे आ जाती है कि भाई research. आप जब A to B, अब अगर मैं एक ग्लास यहाँ से उठाता हूँ और वहाँ पे लेके जाता हूँ, उसके अंदर कितनी एनर्जी, कितनी एफर्ट, कितने पैसे, कितना सब कुछ लगना जी, है, जी. वो मुझे कैलकुलेट करना है। अगरचे कि मुझे, हम लोग जैसे कि उर्दू में पंजाबी में कहते हैं, अगरचे कि वो वारे खाता है, वारे खाता, yes, तो yes. फिर आप करें। जी. अगर वारे नहीं खाता तो फिर वो, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, वो बिजनेस नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। And the reason you're in business is to make money and sustainable money. Unless your ultimate game is to buy a business and then sell on very quickly, or 3 months, 5-year plan and work backwards. जी, बिल्कुल। Because some people, they want a business for themselves for 30, 40, 50 years to their pension and then sell someone to pass it on. So don't forget as well, you know, you've got to think of all these things. Or are you scalping, going in and out, taking a quick profit, then with that profit reinvesting very quickly and then coming out. So there's lots and lots of factors. एब्सोल्युटली। एंड ये जो है ना फैक्टर्स जो है ना, ये बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं, ये बहुत, जिसको कहते हैं ना कॉमन सेंस, लोगों के जो, जिनको एंटरप्रेन्योर्स हम लोग कहते हैं, हम लोग भी एंटरप्रेन्योर्स हैं माशाल्लाह, हम लोगों के जो पैशन होता है ना, वो पैशन हमें ब्लाइंड कर देता है, राइट, कि भाई हम लोगों के सामने एक विजन है, एक एम है, एक गोल है, राइट, and trying to pursue that aim, goal, vision, we keep on leaving a whole trail of destruction behind us, right? हमें ये नहीं पता हमारी फैमिलीज कितना सफ़र कर रही हैं, हमें ये नहीं पता हमारी पॉकेट्स कितना सफ़र कर रही हैं, हमें ये नहीं पता हमारे फाइनेंसिस कितना सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग ये समझते हैं, राइट, ये हम लोगों ने एक तसव्वुर कर लिया है कि भाई हम लोग जिस चीज़ को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ गोल्ड, And you're trying to make it work and forcing it to work, which may not be the case. Exactly. Yes. Exactly. It's like overeating. Overeating, Right. absolutely. You know? I know all about that, by the way. You too. Okay. Good. Right. Okay. आगे बढ़ते हैं स्लाइड 11 की तरफ। अब देखें, जब आपने सारे पॉइंटर्स आपने कर लिए, डिस्कवर कर लिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई क्या ये एक बिजनेस मॉडल है? कैन इट बी टर्न इनटू अ बिजनेस मॉडल? Yes. राइट, यानी कि आपने इतनी सारी रिसर्च तो कर ली, उसके बाद इज इट सस्टेनेबल? सस्टेनेबल यानी कि आप क्या इस चीज़ को खींच सकते हैं, इसकी मार्केट एग्जिस्ट करते, क्या ये नीड सस्टेनेबल है, क्या ये प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, क्या ये बायर सस्टेनेबल है? If the buyers are old, for example, and then what's going to happen when they start dying? Yes. But if you start them young and they go, then you know you've got 30, 40, 50, 60 years, you know, for doing things. So you also have to look at the age group as well of the buyers. Is it sustainable, long term or short term? Absolutely right. तो you know, तो that's exactly what it is. So बहुत लोग जो है ना वो बिजनेस, मैं जब किसी चीज़ की रिसर्च करता हूँ तो मेरा मेन एम ये होता है कि ये जो लास्ट स्टेप है, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फंडामेंटल एम्स, कि भाई हो सकता है कि मैं एक बिज़नेस खड़ा कर सकूं, तो सारी की सारी रिसर्च जो है ना, लेट्स से इट फॉल्स इनटू प्लेस, तो आपकी नीड भी है मार्केट में, आपका जो प्रोडक्ट है वो भी आपने ढूंढ लिया है, और वो जो है ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड यू नो, एंड देयर इज़ प्रॉफिट मार्जिन इन द प्रोडक्ट, यू कैन सेल द प्रोडक्ट, एवरीथिंग, मगर इज़ इट सस्टेनेबल, इज़ इट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, or is it a fad, जिसको कहते हैं? I'll give you a little example on it. I saw very recently a little clip. There was a butcher shop that had been going for many, many years.
right, in a rural area with elderly people, and it's going. Well, they were young at that time, and then obviously, as people moved in and out and died, butcher shop. The butcher shop, the meat started declining, selling, because the people who were eating meat, no longer were there, and there wasn't enough. And the reason what happened was that more Muslims were coming into the area, and they weren't going to that butcher shop because it wasn't halal. Wow. So what this person done, someone said, well, if you sell halal meat, all the people are Asian now who are living in this area, they will come to you and buy the meat. Very good example. So then he started buying and purchasing halal meat to sell in his butcher, because meat is the same. Absolutely. It's just the cuts. And then his business started thriving. Same business, halal, non-halal. Because the halal people who were not eating halal started dying off, and they started moving out, and then Muslim people started coming into the area, and they weren't going to him because the meat was not halal, and he didn't click on until a Muslim person said, look, if you sell halal meat, then everyone will buy, and you won't have to close down your shop. That is such a good example, Tamkin. I'm glad you've raised it, because this is servicing the right segment of the market. Yes. ठीक है ना? It's adaptability. Yes. मैं आपको एक मैं भी शेयर करना चाहूँगा एक रिसर्च, अमेरिका की रिसर्च है, नेशनल फ्लोरिस्ट एसोसिएशन, जो फ्लोरिस्ट की एसोसिएशन, फ्लावर्स की जो एसोसिएशन है, उन लोगों ने एक रिसर्च की, क्योंकि बहुत सारे फ्लोरिस्ट जो है ना, they started to struggle in terms of money. Of course. It's credit crunch and financial crisis and all. Buying the right types of flowers at the right time, getting them delivered, perishable goods. Absolutely. Everything that goes with it. So they did the research, and what came about in the research as a result was amazing. Basically, Valentine's Day पे एक young लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए तकरीबन समझे $35 खर्च करता है, एक यंग लड़का between 17, 18 to 30, 35 years of age. So they even had down to the age group. जी, उन लोगों ने proper detail research की. Well, we are going to a break very soon, so I want to hear this story about the flowers and perishable goods, but we'll listen after. And definitely, I'm sure the viewers, we have them in suspense now. What happened? What happened? But we're not going to tell them till after the break. So, inshallah, keep watching the iBiz show, and we'll be back after this short break, inshallah. iBiz show with Tamkin, Riaz and me, Faisal Talpur. And we are back after that short break on the iBiz show. And just before the break, we were talking about flowers and some research done on flowers. So just recapping then. जी, हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहे थे कि भाई अगर आप एक बिजनेस में हैं ऑलरेडी, आप अगर थोड़ा सा अपना फोकस चेंज करें, अपना सेगमेंट चेंज करें, तो आप किस तरीके से पैसे बना सकते हैं. नेशनल फ्लोरिस्ट एसोसिएशन जो है अमेरिका की, उन्होंने एक रिसर्च की वैलेंटाइंस डे के ऊपर कि भाई जो यंग क्राउड है वो जब अपने वाइफ्स के लिए फ्लावर्स या बुकेज खरीदते हैं, राइट, तो वो कितना पैसा खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर पीपल. तो बस ये समझिए, क्योंकि वो फ्लोरिस्ट वगैरह दे वर स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग क्रेडिट क्रंच एंड ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस. तो रिवील ये हुआ कि जो 17 उम्र से लेके अप टू 30 उम्र तक के लोग हैं, वो तकरीबन $35 खर्च करते हैं बस अपनी वाइफ्स को वैलेंटाइंस डे पे फ्लावर बुके देने के लिए. जी. एंड इफ यू चेंज दैट सेगमेंट टू पीपल हु आर 40 to 65 or 70, yes, do you know the difference? They spend $350. They know more people on average. They know more people who are dying and in hospital. Yeah, exactly. So rather than just one period, all throughout the year they are spending on flowers and and then helping each other and giving flowers. Yeah, they can. That could be it. And visiting the graveyard and this, that, and the other. You see, where the youngsters won't be visiting as often. Right. So there is going to be a 10 times difference almost. From their point of 10 view. times. From their point of view, they're earning more money. Yes. They've earned their money. They probably have got a lot more savings. Yes. They're not a student anymore. They're not into a young job anymore. That's right. They want to show more affection, maybe, perhaps, to their wives. Or when they're visiting and whatever, they can't eat chocolates. They've all got diabetes or something or something. So best and safest bet is to give flowers. Whatever reason it is,
380%. Yes, yes. 380% more. Wow. यानी कि अगरचे कि मेरे सामने एक यंग बंदा आता है आपकी तरफ, लेट्स से मैं फ्लोरिस्ट हूँ अब, राइट? आप मेरे सामने आते हैं, आप यंग हैं, मैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट यू, अगर एक मेरे सामने एक एजेड बंदा आता है, अगर मैं उसको फ्लावर्स देता हूँ, 380% प्रॉफिट है। माशाल्लाह। तो मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, राइट? सेम जगह पे बैठा हुआ, सेम चीज़ बेच रहा हूँ, टाइम सेम, पैसा सेम, सब कुछ सेम. I am just putting the flowers under the noses of older people. Yes, yes. That's yes. all I'm doing, Yeah. and I'm increasing my profit by 380%. Right. So it's all about logically thinking कि भाई क्या है क्या नहीं. जी. So that's what it is. चलें अब मेरा ख्याल है 2 मिनट रह गए. जी. Fundamental rules की तरफ चलते हैं quickly. 12वीं slide. 12th slide. Okay, number slide 12. So what is number? नाज़रीन, ये आज के टेकअवेज हैं आप लोगों के लिए, तो ये आप जो है वो जहन में रखें. पहले तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए यू हैव टू बी द मोस्ट केयरिंग ह्यूमन बीइंग एंड जेन्युइनली केयर फॉर योर कस्टमर्स. ये तो पहला रूल है. Customer service, customer is king. Ask them what they want. Look after them and look after them and repeat business. Yes, yes. You don't want to lose your customer. People try and find new markets, new people, and they forget about their customers, their ongoing customers, I'll call it, their bread and butter customers. You tell your bread and butter customers, you look after them. They will tell other people. They will recommend you. New customers is an unknown market. That's right. So look after your customers. The best service you can give them. Exactly right. Exactly right. Second is you have to be targeting a market that is actually buying. Yes, no money, no buyers. Right. Exactly. तो यानी कि आपने अगर चाहिए कि किसी मार्केट में आप घुसे जी, जिसके अंदर कोई कुछ खरीदने को तैयार ही नहीं, यानी कि वही वाली ठेले वाली एग्जांपल, आप ठेला लेके जो है ना वो आप एक जगह बीच में खड़े में जहाँ पे कोई आपके ठेले से कोई चीज़ खरीदने को तैयार नहीं है, तो ये तो फिर यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ बिजनेस. That's right. Or it's a very small business just earning pennies rather than pounds that you can sustain and live on. Exactly. And you will never be able to cover up for the costs, you will never be able to cover up for the money and the expenses and everything. Yes. So there has to be a live market who is paying money to buy things. Yes, yes, right? yes. So that's what it is. And of course it is very important for them to be able to want what you are selling. Yes, yes, yes. यानी कि आपने जो प्रोडक्ट दी है उनको, या आपने बनाई है, या आपने दी है, या आपने जो कुछ. It's like selling to a dead market. You can't sell to a dead person, really. You see, so it's got to be live and current. That's right, right, current. You like that? Yes. And most important ये है कि भाई. Well, unfortunately, as usual, we've run out of time, and what can we do? So thank you very much for watching the iBiz show. I hope you enjoyed this program. Please keep telling us your feedback. Thank you for watching the iBiz show.